Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. I am Atul and today I will discuss the problems of the assignment which I have given to you. Clear? Okay students, take out your assignments. Okay, in this, the first question is, will the current flow more easily through a thick wire or thin wire of same material when connect to the same source, and why? Clear? Okay, first of all, you should remember the formula of I. It is equal to V upon R. For the same source, I proportional to 1 by R. Clear? Okay. We know that R inversely proportional to area. Clear? Okay, in this case, we have to compare thick and thin wire. Area of thick wire is greater than area of thin wire. So, we can say that resistance of thick wire is less than resistance of thin wire. करंट उसमें से आसानी से पास करेगा जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. तो रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ थिक वायर इज लेस. सो करंट थ्रू thick wire flows easily. Clear? Okay student, now question number second. A wire is compressed to make its length 1/3 of initial length. Calculate the new resistance. Okay student, in this case, final length is L by 3. It means 1/3 of initial length. Then you have to tell the final resistance. Initial resistance is R, rho L upon A. Clear? Final resistance is suppose R dash rho L dash upon A dash. L dash we have L by 3. We have to calculate the value of A dash. So, we know volume before compressing and volume after compressing will be same. Volume before compressing equal to volume after compressing. Volume before compressing A into L, volume after compressing A dash into L dash. So, A dash will be equal to A into L divided by L dash. Area A, L. L dash कितना है? L by 3. L से L गया तो it will become 3A. तो एरिया कितना बन जाएगा? थ्राइस. इसका मीनिंग है जितना डिक्रीमेंट L में हुआ उतना इंक्रीमेंट A में हो जाएगा. क्लियर? सो R डैश विल बिकम रो L डैश की वैल्यू L by 3, A डैश की वैल्यू 3A. सो इट विल बी 1/9 रो L अपॉन A, या 1/9 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस. इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड अ शॉर्टकट टू मैच द आंसर. यहाँ पर लेंथ का फैक्टर कितना? 1/3. तो फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस. क्लियर? ओके स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखेंगे, इस केस में हमने कंप्रेस किया है. जब भी कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया. मीन्स इफ लेंथ इज गिवन देन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया. इफ एरिया इज गिवन देन यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ, and by putting in the final expression you will get the value of new resistance. But if simply I say that if I make the length of the conductor twice,
इन दैट केस ओनली एल विल गेट चेंज, क्योंकि उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि हमने स्ट्रेचर कंप्रेस किया है। तो इन केसेस में आप क्या मानोगे, फॉर द सेम एरिया वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ। क्लियर? सो सिंपली मान लो आर डैश की वैल्यू रो एल डैश है, ए क्या रहेगा, सेम। क्लियर? Okay students, now question number 3rd. A copper wire has diameter 0.5 mm diameter 0.3 mm. So radius will be equal to 0.3 by 2 mm. We have to convert millimeter into meter. So 10 raised to power minus 3 meter. Clear? And resistivity 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make resistance 10 ohm? It means R 10 ohm, length we have to calculate. We have a formula R equal to rho L upon A. Length we have to calculate, L equal to R A upon rho. Resistance is equal to 10. Okay, area pi R square. Rho 1.6 into 10 power minus 8. L 10 into pi value 22 upon 7, R value 0.3 upon 2 into 10 power minus 3 का square divide by 1.6 into 10 raised to power minus 8, and it will become 122.7 meter. Clear students? Okay, now question number 4th. Students, a graph between I and V is given to you at two temperatures T1 and T2, and we have to tell that which temperature is higher. V, I, T1 and T2. Okay. इससे पहले हमें एक चीज का पता है, कंडक्टर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर. जिस केस के लिए टेम्परेचर हाई है उस केस के लिए रेजिस्टेंस क्या मिलेगा हमें, हाई. तो फ्रॉम द IV ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द रेजिस्टेंस फॉर विच रेजिस्टेंस इज हाइयर. लुक फॉर द सेम पोटेंशियल. क्लियर? Suppose it is current I1, it is current I2. For this current is I2, for this current is I1. Clear है? So इस केस में करंट की वैल्यू क्या कम. We know that R equal to V upon I. For same V are inversely proportional to I. तो जिस केस में करंट कम होगा उस केस के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई. तो फॉर दिस केस द रेजिस्टेंस विल बी हाई. सो R T1 ग्रेटर देन R T2. ये क्लियर है? देयरफॉर
temperature T1 greater than T2 as resistance increases with temperature. जिस केस के लिए रेजिस्टेंस हाई होगा उस केस के लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई. ओके. Students, now question number 5th. An amount of 100 joule is done in transferring a charge of 5 coulomb from one terminal to other terminal of the battery. एक बैटरी आपके पास, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपने 5 कूलम चार्ज को मूव करवाया है बाय डूइंग 100 जूल वर्क. यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज. So in this case, work done is equal to 100 joule. Clear? Charge is equal to 5 coulomb. We know that work done divided by charge is potential. Clear? Your potential difference. So V will be equal to W upon Q, that is 20 volt. So between two terminals of the battery, the potential difference is 20 volt. Okay students, now question number 6th. Potential difference across a heater is 60 volt. So voltage is 60 volt when it draws the current 4 ampere. Current is 4 ampere. If we increase the potential to 120 volt, final potential is 120 volt, then calculate the new current across the heater. My dear, for the calculation of current, you need potential and resistance. According to Ohm's law, we know that V equal to Ri. Clear? So from this data, we will calculate the value of R. V equal to R into I. So R equal to V upon I. I कितना है 4. So it will be 15 ohm. Clear? So now final voltage we have, resistance we have, final current will be equal to V dash upon R. क्योंकि V किसके इक्वल होता है, RI के. For new voltage the current will be new. So V dash is equal to 120 and resistance is equal to 15. It will be 8 ampere. My dear students, we knew already because V यहाँ पर 60 है तो करंट कितना है 4. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल. अब पोटेंशियल को हमने कितना कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो करंट भी कितना होगा, ट्वाइस. सेकेंड, कई बच्चों के मन में ये आता है सर फ्रॉम दिस डाटा वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आर, व्हाई यू हैव पुट दिस आर हियर. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया कि टेम्परेचर वैरी कर रहा है, तो एट द सेम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम. Clear? So first of all we will calculate R, then we will put in the new expression. Clear? Okay students, now question number 7th. Draw a circuit diagram having ammeter, voltmeter, resistor, key connected to a battery consisting 3 cells. Clear? Okay students, look, question number 7. Okay, a resistor R. Clear? In parallel to this resistor we will have voltmeter. In series we will attach ammeter. Clear?
So ammeter we have placed, voltmeter we have placed, resistor we have placed. Now key and a battery consist in 3 cells. Okay, now it is a symbol of 1 cell, 2 cell, 3 cell. Clear? And connected with a key. Clear students? It is a key और आप की को ऐसे ही बना सकते हैं. Clear? Key, 3 cells, ammeter, positive, it is positive, it is positive. Clear? Okay, now question number 8. Look, a TV set shoots a beam of electron and the current is 10 microampere. How many electrons strike the TV screen in each second? Student, is it clear? Okay, students, look. A TV set shoots a beam of electron and current is 10 microampere. Current, that is I, 10 microampere, that is 10 raised to power minus 6 ampere. Clear? Okay, how many electrons strike the TV screen in each second? Time is 1 second. Clear? So हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे. So first of all, what I will do, I will calculate the total charge in 1 second. Total charge Q equal to I into T. I value is 10 to the power minus 6, T is 1. So 10 raised to power 6 coulomb. Total charge we know. Charge on one electrode is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मुझे पता है, टोटल चार्ज मेरे पास है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. सिंपल मैथमेटिक्स मैंने यहां पर लगाया. टोटल चार्ज कितना है? 10 की पावर माइनस 6 और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, it is all about the assignments problem. Students, in the next video we will do the series combination of the registers and then parallel combination of the registers, and it is sufficient for the today's lecture. Hope so you have understood this. So students, have a nice day and thank you.